चलिए नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस चैप्टर में मेन चीज क्या है पता है, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, लाइक हमें सिंपल जो भी इक्वेशंस दी गई थी उसमें से हमने इजीली जीरोस फाइंड कर लिए, जीरोस में से हमने कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज बना ली, राइट। पर अगर हमें सपोज ऐसा कुछ दिया जा रहा है ना जिससे बच्चे क्या होते हैं ना, सबसे पहले डर जाते हैं कि व्हाट एक्चुअली इट इज। पर इन सब के लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं, अगर आप वो फॉर्मूलाज याद कर लेते हैं देन दिस विल बिकम मोर इजियर फॉर यू, इट विल बी लाइक यू कैन इजीली सॉल्व इन फ्यू स्टेप्स। चलिए सो यहाँ पे अब अगर आप देखें, इफ अल्फा एंड बीटा अगेन इट इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दैट इज ax² प्लस bx प्लस c, तो जो हमारा आइडियल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट अदर पॉलिनोमियल जिसके जीरोस हैं दिस वन, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, लेट अस जस्ट राइट p of x is equal to ax square plus bx plus c, जो हमारा ओरिजिनल दिया हुआ है, राइट। नाउ फ्रॉम दिस यू नो दैट इफ p of x is equal to 0 then the sum of this polynomial, let us say alpha plus beta, will be equal to minus b by a. Suppose if you are saying the product, so product will be alpha beta which is equal to c by a, right. So ये तो हमारा एक जनरल था from which we have find out the sum and the product. Now we have to make other polynomial from this zeros, right. तो हमें पता है जब भी हमें zeros दिया होता है हमें क्या करना पड़ता है, we will use the formula, right. जब भी आपको zeros दिए जाते हैं तो you use the formula. What is that formula? That polynomial of x is equal to k into x square minus sx plus p, ये हमारी फॉर्मूला है, राइट। तो उसके लिए क्या कर रहा है, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द सम, वी नीड टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट। तो अब अगर हमारे पास ये जीरोस है, लेट अस से वी हैव अ जीरो, हम उसको a भी नाम दे सकते हैं, b भी नाम दे सकते हैं, जो नाम देना है वो दे दो। लेट अस से द फर्स्ट जीरो a इज अल्फा स्क्वायर बाय beta. Let us say we have another zero that is b which is equal to beta square by alpha, okay. Now we have to go with a plus b. So if you add it up, it will be alpha square by beta plus beta square by alpha, which is equal to alpha cube plus beta cube by alpha beta. Is this clear? So when you are given with alpha cube plus beta cube alpha beta, see हमें इस आंसर को रिलेट करना है इसके साथ, right. Now कोई भी चीज हमें दी जा रही है ना, we have to write the equation in the form of a, b and c. There should not be alpha and beta in the quadratic formula. तो अब हम क्या करेंगे, we will try to use okay. So in this case what we will do, we will try to use the some formula to get the solution. हम इसको पूरा solve नहीं करेंगे, so here we will use the formula. So here the formula is alpha cube plus beta cube is equal to minus b cube plus 3abc over a cube, okay. So this is the formula for alpha cube, that is minus b cube plus 3abc by a cube. So directly हम यही यूज करेंगे, ठीक है। So now alpha cube plus beta cube we will write here minus b cube plus 3abc by a cube. Now alpha and beta is given you in the division format, so I'll write here in the form of a division alpha beta. And what is alpha beta if you are given with this polynomial? So it is c by a. So I'll write here divide by c by a. So now we will write minus b cube plus 3abc over a cube
multiply a by c. We can cancel this, right? So now we will get the final thing, minus b cube plus 3abc upon a square c, right? अब प्लीज कोई भी गलती मत करना, जहां पे बच्चे करते हैं वो इस c को भी कैंसिल कर देते हैं. सी दिस इज इन द एडिशन, यू कैन नॉट कैंसल इट, राइट? यहाँ पे जो मैंने a कैंसिल करा, इट इज डिविजिबल, इट because they are in the numerators and denominators, so please don't cancel that things. Now this is our sum, ये जो मुझे यहाँ पे मिला है, this is our sum, right? Now last thing what we need to get is the product. So product की formula, यहाँ पे a and b is given to you, so we will write a times b, which is equal to alpha square by beta multiplied by beta square by alpha. तो easily हम numerator and denominator cancel कर सकते हैं, and we will get the answer alpha by, sorry, we'll get the answer alpha beta, alpha beta. Done? तो ये जो हमें मिला, this is the product. Now you know what is the formula to make this a quadratic polynomial, so we'll write accordingly. P of x is equal to x square minus b cube plus 3abc over a square cx प्लस अल्फा बीटा. तो ये अल्फा बीटा क्या था हमारा, दैट इज c by a, c by a. So this is your final quadratic polynomial. So is this clear? अगर आप चाहते हो कि ये sum like you can solve it smoothly, so please remember the formulas. देखिए, अगर आप फॉर्मूला याद नहीं रख पाते हो, एग्जाम टाइम में भी देयर इज सम इश्यूज दैट यू कैन नॉट रिमेंबर द फॉर्मूला, नो नीड टू वरी. यहीं से आप स्टार्ट कर सकते हो बाय यूजिंग अ सिंपल algebraic formula, alpha plus beta whole cube, right, minus 3 alpha beta. You can use the formula to get the answer, right? So I hope this question is clear. Let's move to the next question. Now here again you are given with, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, this is our quadratic polynomial, then find the value of this one, right? Now again, if you wish to solve these things easily, smoothly, you should remember the formulas. Okay, so before we write down the formulas, we'll first write down that what the polynomial is given to us. So p of x is equal to 3x square minus 6x plus 4. जब भी आपको पॉलिनोमियल दिया जाए ना, you just first write down the polynomials, उसका सम फाइंड कर दो, उसका प्रोडक्ट फाइंड कर दो, राइट? तो यहाँ पे भी we will find out the sum, that is alpha plus beta, which is equal to minus 6 over 3 minus, which is equal to positive 2. When you are going with the product, that is alpha beta, so for this that is 4 upon 3, right? I think अब आपको formulas याद है, right? Minus b by a and c by a. So here we got one of the thing. Again बहुत सारी चीजें दी हुई हैं where we can use the formula. Now we will try to solve or we will try to get the formula for each and every terms. So यहाँ पे जो पहला आपको दिया हुआ है, that is alpha upon beta plus beta upon alpha. So here you can simply write alpha square plus beta square upon alpha beta, right? Now when you are writing down this, what we need to do here, we have to just write down in the form of a, b and c, okay? जो हमारी general equation होती है, a x square plus b x plus c. So here we can write it down.
b square minus 2ac upon ac. So this is one of the formula what we are going to use here. Secondly, here you are given with 1 upon alpha plus 1 upon beta. So here also you can use alpha plus beta upon alpha beta, and when you calculate this like minus b upon a over c upon a, you will get the answer minus b over c. अब यही चीज हम directly use करेंगे और directly will substitute this derived formula into the questions. Okay, so directly we can write alpha upon beta plus beta upon alpha plus 2 1 upon alpha plus 1 upon beta plus 3 alpha beta, which is equal to b square minus 2ac upon ac plus 2 into minus b upon c plus 3. Now alpha beta, we know that. What is alpha beta? It's already c upon a. अब यहाँ पे सबकी वैल्यूज है हमारे पास, राइट? हाँ, b की वैल्यू नहीं है, a c नहीं है, so that we can get it from the polynomial itself. यहाँ पे हमारे पास कोएफिशिएंट है, so from there we can use it. Okay, so b square. So if you want a b square, we can write a square of negative 6 minus 2 a into c over a into c plus 2 minus b over c, that is minus 6 over 4 plus 3 c upon a, which is already 4 upon 3. So यहाँ पे we can start with the cancellation. 6 6 are 36, 36 minus 24 will be equal to 12. So 12 upon 12, this will be 1 plus 6. 2 times 2, 2 times 3. So again you will get here positive 3. We can cancel 3 and 3. We will get positive 4. Now 4 plus 3 plus 1 is equal to 8. Right? Is this clear? Because we just need to find the value. We are here not supposed to, we don't have to make any of the quadratic formula. Right? So हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा? We have derived the formula and the value is 8. Is this clear? देखिए sums जो होते हैं ना वो खाली दिखने में difficult होते हैं. They are not at all difficult. ठीक है? If you follow the proper steps, you can easily get your answers. Only the thing is that with this chapter, your basic algebraic formulas should be very strong. Secondly, you should be thorough with whatever the new formulas are being introduced. अगर आपको ये याद है, so you can easily solve any of the questions.